Good morning, students. Today we are going to do picture composition. Okay. Now, in picture composition, I'll send you a picture. Okay. You will see that picture carefully. You can see above, I have sent you a picture, right? First of all, you will see this picture carefully. जब भी हम पिक्चर कॉम्पोजिशन करेंगे आपने जो भी पिक्चर आपको दी गई है सेंड की गई है आपने उसको ध्यान से देखना है ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आइडेंटिफाई द सीन शोन इन द पिक्चर सबसे पहले आप देखोगे कि जो भी आपको पिक्चर दी गई है उसमें कौन सा सीन आपको दिया गया है ओके नाउ इन दिस पिक्चर you can see this is a picture of a garden okay so first line will be about the scene so you will write this is a scene of a beautiful garden okay now after writing this you will observe what are the objects given in the picture now see here there is a girl right so you will write there is a girl in the picture now what is this girl doing ये गर्ल कर क्या रही है the girl is watering the plants the girl is watering the plants now see the garden what is grown in the garden can you see that pumpkin a big pumpkin in the garden right अब pumpkin कहाँ पे पड़ा हुआ है ग्राउंड में पड़ा हुआ है ना राइट सो यू विल राइट देयर इज अ पम्पकिन लाइंग ऑन द ग्राउंड नेक्स्ट व्हाट एल्स इज ग्रोन ऑन द ग्राउंड क्या क्या ग्राउंड में उन्होंने ग्रो किया हुआ है उगाया हुआ है कैरेट्स टर्निप्स टमेटोज एंड कैबेज सो यू विल राइट carrots, turnips, tomatoes and cabbage are grown in the ground. Okay. Now, if you see the picture carefully, there is a rabbit, right? So, what is the rabbit doing? The rabbit is hiding behind the cabbage. So, you will write the rabbit is hiding behind the cabbage. जो rabbit है cabbage के पीछे ऐसे छुप रहा है ना right? So you will write the rabbit is hiding behind the cabbage. Next, if you see the picture carefully, in the garden there are two insects, right? There is a snail and there is a caterpillar, right? So about that you will write there is a snail and a caterpillar on the ground. Now see carefully. There are some other animals, right? There is a cat. Yes. So what is the cat doing? The cat is sitting on the fence. Now what is fence? ये जो वुड से ऐसे बार्स बनाई हुई हैं जिससे हम कोई भी प्लेस को कवर कर लेते हैं गार्डन को हमने फेंस के साथ कवर किया होता है ना सो ये जो वुड से बार्स बना के कवर किया होता है जिसको उसको हम फेंस बोलते हैं ओके सो 8th लाइन विल बी द कैट इज सिटिंग ऑन द फेंस नाउ सी इन द स्काई देयर इज अ सन What is the sun doing? The sun is shining in the sky. Next, now outside the garden, what are there? There are beautiful flowers, right? So about that, you will write, there are beautiful flowers outside the garden. Okay? Now see above the flowers, there are beautiful butterflies. So next line will be butterflies are flying above the flowers. Now
After writing about all these things, if you want to write something else about this picture, you can write. If you observe something else in the picture, अगर आपको कुछ और चीज़ ऐसी लगती है जिसके बारे में आप सेंटेंस लिखना चाहते हो, वो भी आप लिख सकते हो. ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए. ओके. After writing all this, you will conclude this picture in a line. Okay. Last line आप लिख सकते हो. The garden is looking very fascinating. Okay. Fascinating means beautiful. ठीक है. Attractive. जो गार्डन है वो बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है. तो ये लाइन आप कैसे लिखोगे? The garden is looking very fascinating. Fascinating spellings are Fascinating. Fascinating. Okay. So this way you will do the picture composition. After listening this audio, do this picture composition in your notebook and send the picture to me. Okay. Thank you. Have a nice day.